Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you English for 10th class students. इसमें हम पोएम पढ़ेंगे आज. पोएम का नाम है Lost Lesson of the Afternoon, written by D.H. Lawrence. हमने कल भी इसका एक स्टेंजा पढ़ा, लगभग 2 स्टेंजा. तो आपने इसमें पढ़ा कि पोइट जो है D.H. लॉरेंस वो काफ़ी तंग आ चुका है क्लासरूम में. ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर द आफ्टरनून व्हेन विल द बेल रिंग एंड ही विल गो आउट बिकॉज हिज स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी टू लर्न. दे आर tired, they feel uneasiness in classroom. Poet calls them unruly hounds. He compares the students with unruly hounds. ये कहकर कहता है कि my pack of unruly hounds. जिस तरह शिकारी कुत्ते बांधे जाते होते हैं शिकार करने के लिए, और पोइट कहता है कि मेरे जो ये डॉग्स है, मेरे जो ये स्टूडेंट्स है, ये जस्ट लाइक उन कुत्तों की, शिकारी कुत्तों की मानंद है जो कि टू होम दे वांट टू हंट बट दे आर नॉट रेडी. इसी तरह the teacher means to say that his students hate to hunt in the quarry of knowledge. Teacher says that his students are not ready to learn in the classroom. वो फील करता है, वो कहता है आई एम सिक नाउ व्हेन आई सी फुल 3 scores. जो किताबें कापियाँ पड़ी है चेक करने के लिए डेस्क पे, वो बहुत तंग आ चुका है. Now, in next stanza, my last dear fuel of life to heap on my soul, and I kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults and punishments. I will not. Poet says, So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. फ्यूल इधर फ्यूल का मतलब है ईंधन, ताकत, तवनाई. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. वो मैं अपने इस सोल पे ही खर्च करता हूँ. All kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults and punishments. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? In these lines, poet expresses the firm decision that he has taken. शायर जब तंग आया, पोइट जब तंग आया तो उसने एक डिसीजन लिया. क्या डिसीजन लिया? ही सेज दैट ही विल नो लॉन्गर वेस्ट द फ्यूल. वो अपनी एनर्जी को ज़ाया होने नहीं देगा. ऑफ हिज लाइफ विच ही वैल्यूज सो मच. वो अपनी ये कीमती एनर्जी को इन स्टूडेंट्स पे, अनरूली स्टूडेंट्स पे खर्च नहीं करेगा. He will use this fuel to kindle a flame in his soul. अपने वो इस एनर्जी को किस चीज़ के लिए करेगा खर्च? To kindle a flame in his soul. अपने सोल को उजागर करने के लिए, अपने सोल को जिंदा करने के लिए. देखो प्यारे बच्चों, इस पोइम के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि पोइट जो है, ये जो टीचर है, टीचर बहुत ही तंग आया है
ये जो क्लासरूम सिचुएशन होती है, इट डिपेंड्स अपॉन टू वे, जिस तरह टू वे ट्रैफिक हम बोलते हैं, उसी तरह टीचर लर्निंग एंड स्टूडेंट्स, टीचर टीचिंग एंड स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस पे, टू वे प्रोसेस पे ये चलता है। स्टूडेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, टीचर का भी मादा होना चाहिए, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करेगा टीचर जो कि रेडी ना हो पढ़ने के लिए आफ्टर एवरी एफर्ट्स। देखो बेटा, the flame will consume or burn down all the dross of indifference he has received from his students. उसने बहुत सारी कोशिश की, अपनी ज़िंदगी की जो तमाम कोशिशें उसने इन स्टूडेंट्स पे की कि वो सीखें। On the road of his life he will no longer give passage to their insults and receive the toll in the form of punishments. पॉइंट कहता है, न मैं उनको अब सज़ा दूंगा, न मैं अब बहुत कुछ खुद मैं ये इतना नहीं भुगतूंगा, मैं इन पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ। वो क्या करना चाहता है? वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी की सड़क के ऊपर वो इनकी बेइज्जती को गुजरने नहीं देगा, नहीं सज़ा की शक्ल में उनसे कोई राहदारी वसूल करेगा। ये पॉइंट जो है ये कहता है कि मैं अपनी जो इज़्ज़त थोड़ी बची है इन स्टूडेंट्स के सामने, मैं ये अपने लिए रखता हूँ, न कि ज़्यादा इंसल्ट्स में अब बर्दाश्त करना चाहता हूँ। पॉइंट इन दीज लाइन्स सेज, so shall I take my lost dear fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of indifference and take the toll of their insults in punishments. I will not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? मैं जो भी केयर करता हूँ, मैं जितनी भी केयर करूँगा इन बच्चों के लिए, सारा गलत है, सारा बेकार है। Take the toll of their insults in punishments means उनके ज़रिए की गई बेइज्जती को मैं अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं अपनी एनर्जी को सेव रखूँगा अपने सोल को उजागर करने के लिए। दिस फ्लेम विल कंज्यूम और बर्न डाउन ऑल द ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ड्रॉस ऑफ इंडिफरेंस मीन्स दाद की जो मैल होती है वो उसने खाई, उसने बहुत बेइज्जती भुगती है, अब ये ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अब मैं उनको ऐसे ही छोड़ूंगा जो कुछ वो चाहते हैं। अब मैं गलत करता हूँ अगर मैं उनके लिए केयर करूँगा। The poet expresses a firm resolve that we will bear all this no longer. वो अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। He will no longer waste his soul and strength for this futile exercise. इस फजूल एक्सरसाइज, जबकि स्टूडेंट्स ना कुछ लेते हैं ना कुछ वहाँ से देते हैं, ना वो पढ़ने के लिए तैयार है। दैट इज़ वाई टीचर इज़ रेडी टू गो आउट and he is waiting for the last bell of the afternoon. Now he doesn't care a fig for all the wrong things that they do. ये अब ये जो पोइट है, ये जो टीचर है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा ज़्यादा, अब इसको ये अब तंग आ चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पोइट ने कहा है, ये इतना तो समझ आया, so shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. क्या कहता है पोइट? जब तंग आया है, he will preserve his energy of life for which he values so much. He will use this fuel of kindle a flame in his soul. वो अपने इस रूह को ताज़ा करने के लिए
वो सारा कुछ खर्च करेगा. This flame will consume or burn down all the dross of this fuel of kindle a flame in his soul. ये तमाम जो इसके अंदर जो रूह में जो मैल लगा है तो वो ख़त्म कर देगा और अपना एक नया सोल बर्पा करे, अपना एक नया सोल जिंदा करेगा. This flame will consume or burn down all the dross of indifference he has received from the students. और अपना ये सब कुछ साफ करेगा जितनी वो insults और punishments उसने students से ली है. On their insults and punishments, I will not waste my soul. Poet wants to give us a message that he won't now let his students to insult his teacher, and he won't now bear this all. The poet expresses a firm decision now. He will no more care for them, and his soul and strength, he will keep his fuel. He won't waste his soul and strength for this futile exercise. इतना कुछ इसने इस स्टेंजा में कहा है. Now in another stanza poet wants to say, क्या कहता है? I do not and I poet कहता है what is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. In these lines, poet says he finds that his students have no interest at all in learning, so he says that he sees no point in his teaching or in their learning. वो कुछ भी नहीं, कोई fruitful thing नहीं देखता है अपनी teaching और उनके learning में. It is all waste of time and energy for both of them. Teachers की भी energy जाती है ऐसे students को पढ़ाने में और students का भी ये जाता है. Now all teachings and learning going in a bottomless pit. अब ये जो यहाँ पे word है abyss, abyss की spelling है ABYSS. abyss. abyss का मतलब है, ये एक word है a bottomless pit. a bottomless pit. a bottomless pit. abyss. कहता है poet कि जो भी what is the point to us both, it is all. शायर जो है वो कहता है कि यहाँ पे what is the point of their teaching of mine and of this learning of theirs? It all goes down the same abyss. जो कि मैं पढ़ाता हूँ वो सीखते हैं, तमाम एक bottomless pit में जाता है जहाँ से वो वापस नहीं आएगा. What does it matter to me if they can write a description of a dog or if they can't? Poet says, ये जो teacher है, he has now taken a decision. He has stopped worrying about these nonsense students. Now he doesn't care whether the students can write a few lines on a topic dog or not. चाहे उनको आए dog पे कुछ लिखना, कुछ सतूर लिखना या नहीं आए, मुझे कुछ नहीं है. In fact, it doesn't matter both to the teacher and the students. ना उनका कुछ जाता है ना मेरा कुछ जाता है. What is the point? To us both it is all my aunt. And yet the teacher is supposed to give his best care to the students. But how can one take care of someone who doesn't want to be cared for? So the teacher has taken a final decision. He doesn't want to teach such students and will not teach them. The students don't want to learn and will not learn. They are all very care
So the teacher decides to keep his strength for himself. He will use this strength in the way that he likes. The students will use their strength the way they like. They can use it in the way they like to. There is no need for the teacher or the students to beat their heads. What is the point to us both? It is all my aunt. I think ये जो यहाँ पे है, it is all my aunt means I don't care. It is all my aunt means I don't care. ये जो poet है ये कहता है कि now I have taken a decision that I don't care for these unruly students, and yet I am supposed to care with all my might. मैं अपनी ताकत का सोचूंगा, जो कुछ मेरे पास है वो मैं अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूँगा. I do not and I will not. They won't and they don't. उनकी अपनी life है, they have their own lives and I have my own life. The students can keep their strength for themselves and I can keep my strength for myself. Why should I beat my head against the wall? मैं क्यों अपना सिर फोड़ूंगा? Having made this decision, the teacher sits down in the class and waits for the last bell. I shall sit and wait for the last bell. In this poem, आपने समझा कि टीचर कितना तंग आया है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से नाला व आहुजारी करता है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, मगर क्या हुआ है, वो यूज़लेस समझता है इसको. और मैं इसी के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ, आप अपनी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज में एज़ यूजुअल, जिस तरह हम क्लासरूम में मैं आपको बोलती थी कि अपनी लैंग्वेज में 10 मिनट में आप इसकी समरी लिखिए, चाहे गलत ही लिखो ग्रामेटिकली, मगर आपको एक अंदाज़ा लगेगा, आपको एक आदत सी हो जाएगी कैसे आप लिखोगे. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. फी अमानिल्लाह.